Well, okay, hi guys. Today's video is dedicated on speed and what happens in our country, in our environment. Today is fast winds. Most people claim that in fast winds, like velocities between 850 to 900 are good. Okay, so I'm just going to try that out and give you a demonstration. GSB 18.13 grain pellets, 0.22, shooting with an impact at 62 yards. You can see the difference. I'm going to start with a velocity of between 880 to 890, see how the grouping is in fast wind, and then I'm going to jump down to 940, 950 so you guys can see the difference. Okay, so let's see, let's go. What happens? Okay, let's start shooting. And this is for just knowledge and how I tune my guns and what I'm achieving in my contra. Okay, thank you. वेल आज का वीडियो है स्पीड पे वेलोसिटीज़ लोग कहते हैं बाहर भी कि स्पीड 850 से लेके 900 जो है ये अच्छी होती है फास्ट विंड के लिए। ठीक है, मैं GSB 18 ग्रेन चला रहा हूँ 0.22, तो आप भी देख लें कि क्या होता है लो स्पीड पे। मैं पहले ग्रुप बनाऊँगा, उसके ऊपर शायद क्लिक्स देने पड़े, लाइक 880 880 से 890 FPS, और फिर दूसरा बनाऊँगा 940 से 950 FPS पे, ताकि आप इंजॉय कर सकें और देख लें फास्ट विंड में यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके गाइस, सो लेट्स, सॉरी फॉर ऑल द इंटरप्शन एंड टॉक इन टू लैंग्वेजेस, सो लेट्स गो बैक डाउन। Okay, let's start shooting. Target number 1, top left. Let's play. Okay, it's been a long time for a short flyer, cold barrel, but what to do? Let's go. Target number 1. एक नंबर पे ऊपर. Let's shoot. And it's windy. आज हवा बहुत है. 875. 800. Okay guys, so you have seen in windy conditions my groups of velocity of 880, same pellets. I'm going to increase the velocity, okay, and let's see what happens. Okay, I have to change the clicks and I'm going up. Okay, so let's see what happens. Now velocities are going to be from 980 to between 980, sorry, my mistake, 940 to 950 FPS. It's very windy. The wind is 9 to 14 miles facing towards me. It's coming from exactly between, you can say, 10 o'clock to 2 o'clock is shifting. अच्छा, अब मैं हाई वेलोसिटी में यही ग्रुप बनाने लगा हूँ. Okay guys, group number 22, target number 22, sorry. Okay, high velocity and high winds, GSB 22 grain, 18.13 grain pellets. Let's see at high velocity 62 yards what they do. Okay, कि जैसे आपने पहले लो वेलोसिटी देखा टारगेट 1 और 2 पे, अब मैं हाई वेलोसिटी सेम हाई विंड्स में टारगेट नंबर 22 नंबर को शूट करने लगा. Okay guys, so let's start. Target number 22. 937, 939, 942, 939, 935, 942, 939, 940,
42. Well, these are unsorted pellets. 37. 900. 39. 900. 42. 900. 37. Well, all in the bowl. Hope you guys have enjoyed it. Sorry, the camera had moved. I did not know that. So let me show you guys again. Like this was high velocity before I was shooting 880 FPS. Now I was close to 940 FPS. And as you can see, target number 22, one flyer, unsorted pellets. I don't know, 10 plus shots, whatever. So you guys can get an idea. Sorry, my cam is moving. Okay, so this is the group I've shot, one flyer in this wind, but look how tight the group is, basically. Let me go up to target number 1, which I shot before, which you have seen on video. Okay, that's 880 FPS. And this is target number 2, which I shot after that at 880 FPS. I did not like, so I stopped it. अच्छा, ये टारगेट आप देख रहे हैं जो पहले मैं चला चुका था 1 नंबर और 2 नंबर पे 880 FPS पे 0.22 18 ग्रेन पैलेट के साथ। और अभी ये लास्ट जो 22 आप देख रहे हैं, ये एक फ्लायर आया है, लेकिन देख लें ग्रुप कितना ही टाइट है, 10 प्लस शॉट्स। ओके, ये टारगेट नंबर 22 है। तो आज का दिन था कि तेज़ हवा में लो FPS बेहतर है कि हाई FPS बेहतर है, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ठीक है, इसके बाद मैंने ट्यून भी किए थे, ग्रुप्स काफ़ी आए हैं। सो दिस इज़ इट। सो आई होप यू गेट द रिजल्ट, हाई winds versus low FPS and high FPS. Thank you.